तो यहाँ से जो इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल से निकलता है ट्राइसेप्स, ये और ये ट्राइसेप पीछे चला जाता है। This tricep goes behind. तो ये वाला जो स्पेस है डिवाइड्स इनटू अ लैटरल ट्रायंगुलर स्पेस, अ मीडियल ट्रायंगुलर स्पेस एंड अ क्वाड्रेंगुलर स्पेस, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ से आके इंसर्ट होगा ये कौन सा मसल हुआ, सबस्कैपुलर। ये क्वाड्रेंगुलर स्पेस की अपर बाउंड्री is the capsule, lax part of the capsule, sandwiched between subscapularis and teres minor. इसकी लोअर बाउंड्री is teres major. इसकी lateral boundary is cervical neck of humerus. इसकी medial boundary is long head of triceps. इस स्पेस की medial triangular space की upper boundary is teres minor. Lower boundary is teres major. Lateral boundary is long head of triceps. Lateral triangular space की medial boundary is long head of triceps. Lateral boundary is shaft of humerus. Upper boundary is teres major का lower border around which latissimus dorsi is widening around. बात समझ में आ गई? Nothing passes through medial triangular space. The circumflex scapular artery. The circumflex scapular artery passes through the fibers of the teres major. The posterior circumflex humeral artery passes through the quadrangular space, accompanied by the axillary nerve. The axillary nerve supplies the deltoid. Supplies the regiment batch area skin here and supplies the teres minor. Teres minor की जो सप्लाई है उसके ऊपर सूडो गैंग्लियन होता है। तो जब पोस्टीरियरली जब डेल्टॉइड को उठाते हो तो टीरीस माइनर क्वाड्रेंगुलर स्पेस पहचानने के लिए जिस नर्व के सूडो गैंग्लियन दिखे वो उससे क्वाड्रेंगुलर स्पेस में घुसे, ठीक है। एंड द रेडियल नर्व passes through the lateral triangular and then it becomes dot pierces the lateral intermuscular septum. It is accompanied by the profunda brachii artery. तो ट्राइसेप्स का एक हेड हुआ इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल, ट्राइसेप्स का दूसरा हेड हुआ रेडियल ग्रूव के ऊपर और लैटरल, और ट्राइसेप्स का तीसरा हेड हुआ रेडियल ग्रूव के नीचे और मीडियल। इसके अलावा एक और मसल पोस्टीरियर सरफेस से ओरिजिनेट करता है, उसका नाम होता है अनकोनियस। इट्स लाइक द पोप्लिटियस ऑफ द लोअर लिम्ब, arises from the lateral epicondyle and gets inserted into the posterior border of ulna, ठीक है। इसके बाद नीचे जाके दिस इज द कॉमन एक्सटेंसिव ओरिजिन एंड दिस इज द कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन। इसके बाद जो एल्बो का कैप्सूल है वो तो फॉसी को इंक्लूड करता है, जो एल्बो की सैनोवियम है वो फॉसी को एक्सक्लूड करती है। ऑल फॉसी आर एक्स्ट्रा सैनोवियल, ऑल एपिकोंडाइल आर एक्स्ट्रा कैप्सुलर एक्स्ट्रा सैनोवियल, ठीक है। ओनली द कैपिटुलम एंड द ट्रॉक्लिया आर इंट्रा सैनोवियल, इंट्रा कैप्सुलर। इसकी सॉफ्ट टिश्यू अटैचमेंट्स में कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई डिफिकल्टी? नहीं? कुछ छूटा हो तो बता दो।
Okay, upper end of humerus. Injuries. A patient sustains injury due to fall on an outstretched hand. He has pain, swelling, deformity, loss of function around shoulder. Alright? Presentation clear हो गया? Injury around shoulder. And what you have? Pain, swelling, deformity, loss of function around shoulder. Possibility. What are the possibilities? One is fracture, clavicle, ठीक है? Second thing is fracture, scapula. Third is acromioclavicular dislocation. Fourth is dislocation of shoulder. Fifth is fracture upper end humerus. Correct? Simple is next can be contusion. These are the common possibilities. Okay? फ्रैक्चर क्लेविकल की डायग्नोसिस बनाओ. क्या कहे कि फ्रैक्चर क्लेविकल है? Clavicle is a subcutaneous bone. You will have localized tenderness. You may feel irregularity when you palpate the clavicle. Irregularity and swelling at the site. But the basic thing is that the acromion of that side is nearer to the midline as compared to the acromion of the opposite side. Because the distal fragment is shifted downward, forward and medial. Where is it shifted? For two things. Tenderness, irregularity and downward, forward, medial shift of the distal end, which makes your acromion go nearer the sternum. Supposing there is no history of injury and acromion of both sides is nearer the sternum, so much so that the child can meet his shoulders in front of his chest. What is your diagnosis? Craniocledodysostole. Alright? Fractured scapula usually can follow epilepsy. चारों तरफ से मसल से कवर्ड है, पता लगता नहीं. इसलिए अगर एपिलेप्सी के बाद जो है पेन हो रहा हो अराउंड द शोल्डर, स्पेशली द बैक ऑफ शोल्डर, तो यू शुड गेट ए एक्सरे डन. यूजुअली जो स्कैपुला का वो होता है बॉडी, उसका फ्रैक्चर होता है. और कभी कभी ग्लिनॉइड का भी फ्रैक्चर हो जाता है, ग्लिनॉइड की बेस का. और ग्लिनॉइड की बेस का अगर फ्रैक्चर होता है तो देन इट इज ऑलमोस्ट लाइक डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर. ऑलराइट? तो स्कैपुला, एपिलेप्सी, ग्लिनॉइड के बेस का फ्रैक्चर और ब्लेड ऑफ स्कैपुला का फ्रैक्चर. इसका जो क्लिनिकल सिनेरियो है ये बता दिया तुमने. Now dislocation, this is acromioclavicular dislocation. इसकी खास बात यह है कि you will find a step
as you palpate the lateral quarter of the clavicle, you will find a step going to the superior surface of the acromion. All right. तो ये step जो है, this is diagnostic. Abnormal step. Normally, the upper surface of the clavicle is absolutely flush with the upper surface of the acromion. But if you find a step there, it is acromioclavicular dislocation. Dislocation of shoulder is usually anterior. So you have 4 physical signs that indicate a anterior dislocation of shoulder. The Hamilton ruler test. Everybody knows this. Normally, because you will never be able to touch the acromion and the lateral epicondyle with the same ruler. But if the head has gone inside, you may be able, the mound of the deltoid is gone, and you are able to touch the tip of the acromion and the lateral epicondyle with the same ruler. This is called as Hamilton ruler test. The second is Dugas. The Dugas test is that you cannot reach and touch the opposite part of the shoulder, opposite shoulder by your hand. Third is Bryant's test, and fourth is Callaway's test. The Bryant's test is lowering of the anti-axillary fold. The Callaway's test is increased depth of the anti-axillary fold. So they are almost synonymous. Okay. Upper end of humerus. Upper end of humerus, you have the needs classification. The needs classification divides the upper end of the humerus into 4 parts. The greater and the lesser tuberosity, and the cervical and the anatomical neck. If any of these parts is angulated more than 65 degrees, more than 60 degrees, or displaced more than 2/3, then you need an open reduction and internal fixation. In injury of the anatomical neck, anatomical neck की अगर injury हो जाए, this, then the head becomes avascular, and you may have to replace the head. So replacement arthroplasty of the shoulders you have to be required. Anything else about needs classification you want to say? अंडर ग्रेजुएट को पढ़ाने में कुछ और कहना चाहते हो, इसके बारे में क्लास को बताना चाहते हो? You must always look for injury to the axillary nerve. That means paralysis of the deltoid and policeman badge area anesthesia in all such injuries. Now we will take up the shoulder in detail. We will take up the shoulder in detail. जब एंटीरियर डिस्लोकेशन शोल्डर का केस आता है, तो इसके साथ एक और फिजिकल साइन जुड़ता है, 4 से, that you may be able to feel a bony swelling below the coracoid, which is smooth and where transmitted movements are possible. Transmitted movement.